So welcome all of you all for this Saturday evening Bhagavatam class, and I think we are meeting after 1 month. एक महीना तो आराम से हो गया रहेगा. 3 सैटरडे संडेज तो चांस ही नहीं. उसके पहले वाला मुझे याद नहीं. बिफोर जन्माष्टमी also we had some program or something we had, so we could not meet. So it's exactly 1 month. So I'm sure you people must have studied in the house lot of Bhagavatam, enlightened yourself in the time, due time. I'm very much confident about it. So what do you think? We have to revise this verse, very important verse. I don't know how much people are able to retain what I had told last week. So let's take a fast recap. We are in Bhagavatam, first canto, chapter 5th, verse number 8. We have already discussed that. What was the discussion earlier to that in 5.6 and what 5.7? What was the point discussed? Can anyone tell me? Yes, fast. Whenever you all come to the class, see to that you all revise what you are going to study today. आज क्या क्लास में लेने वाले हैं उसका कुछ तो आपको ख्याल रहना चाहिए. Prabhuji, you told that Vyas Muni asked his spiritual master Naradji why he was so morose. He said after doing all that also he is not having satisfaction. He is not satisfied after giving so much of Vedas, 4 Ved kiye, Puranas, Itihasas, everything was written and everything was given to different teachers. We had already read. Paile Rishi got something, Romarshi got something, all were given different. They were like made authorities of that division. And उनको बोला गया कि ये division आपको संभालना है. And like that he had decentralized the work, so to say. In modern terms, what we call as decentralizing, that's what he had done. And he gave it to everyone. But in spite of doing this great work, how great this work is, now Narad Muni is going to, his spiritual master Narad Muni is going to explain to him. So what we learned, if ever you don't know your direction in life, or you don't know the reason of your mind being sad, physical, I'm not a doctor, no teacher is a doctor, so you can't expect the teacher to, doctor साहब हाथ में दुख रहा है, पैर में दुख रहा है, डॉक्टर साहब बोलेंगे तो डॉक्टर साहब इलाज करेंगे. But a spiritual master cannot do that. But spiritual master can find out what is lacking inside you. And it is generally when a person is having lack of spiritual knowledge, then he is always sad. Because heart and mind should be known. So this is how you have to find out how this whole thing is important with respect to our spiritual knowledge, with respect to our mind. Mind can never be happy, even though you may have the best of the things, luxuries with you, but still you can never be happy. You may possess, you may have pride. Some people think, I got so much, I'm proud about it, I got this thing. Or may I make other people jealous of me, or I make other people talk about me, I am the talk of the town. All this will not make you happy. ये सब करने के बाद भी you can never be happy. You may be the talk of the town, you may be the hero of your club or in your group. Whenever you enter, everyone like, yes sir, how, just because you are a well-paid man. But it's not enough. That's not enough. So this is what Narad Muni is saying, that Bhagavata anudita prayam yasho bhagavato amalam yena evena asau na tushyeta manye tad darshanam khilam. This is the first answer he is giving to the question what Vyasdev has asked. Why am I sad? Why am I not having the satisfaction? Though I have written for everything for the people of Kali Yuga, everything I have given in black and white, लिख के दिए ताकि वो लोग 10 बार पढ़ सकें, तो भी what is the problem? Why people are not able to? I'm not happy that I have not justified my work. That time Narad Muni says this, you have not actually broadcasted the sublime, spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered khilam, useless, worthless.
See, it's generally said कि भाई we are, you know, I'm trying to, people, many people come and tell me, I'm very spiritual. मेरे घर पे मैं रोज़ सुबह पाठ करता हूँ, मैं सुबह रोज़ फलाना फलाना दुर्गा का पाठ करता हूँ या चंडी पाठ करता हूँ या कुछ भी पाठ कर लेता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ. Then that's it. So they think that just doing a part of this little spiritual activity will keep them in a spiritual zone. Mind you, what they are thinking is wrong. You have to understand that Krishna consciousness or bhakti is not just 10 minutes job in the day. It's not just 10 मिनट कर लिया मेरा भक्ति हो गया. शनिवार को हनुमान जी का मंदिर गया, रविवार को मैं इधर गया, मॉल में जाता हूँ, मंडे को इधर जाता हूँ, ट्यूसडे को वापस घूमने जाता हूँ. No, don't try to blend. No, we are trying to blend both. And the best of this, I mean, this coming verses, 2-3 verses are very strong, and they are very very pinching also. इतना strong and pinching है कि आप लोग actually सोचोगे भाई, how come Vyasdev came to know that in 2022-23 we are going to behave like this? उतना साल पहले उनको मालूम पड़ गया कि that's why Vyasdev has written everything, and even Sukdev Goswami is speaking all this to Parishit Maharaj. So you have not actually broadcasted the sublime, spotless glories of the personality of Godhead. What does this mean? What do you understand by this? Spotless glories, क्या मतलब? Okay, let me take verse number 9 also, then we can take it together. यथा धर्मस्य चार्थ मुनिर वर्य अनुकृतः अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः. Very important is ना तथा वासुदेवस्य महिमा, वासुदेव की महिमा यह अनुवर्तित वर्णितः, you have not described. How to understand this is very nice. Vyasdev said, मैंने तो सब पुराणों में भगवान के बारे में बोला है, गणेश पुराण में भी थोड़ा बोला है, शिव पुराण में भी विष्णु का एंट्री है, हर पुराण में एंट्री है, स्कंद पुराण में भी विष्णु का रोल है. Then how you are saying I have not done? Suppose you are invited for a nice lunch, बढ़िया खाना, and generally क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा चटनी, थोड़ा अचार, सलाद, देन एक कटोरी में सब्जी, फिर दूसरा कटोरी में दूसरा सब्जी, फिर माइट बी सम मीठा एंड मतलब पापड़, देन रोटी, चावल एंड ऑल दैट. बट इसका अगर बैलेंस मैं हिला देता हूँ, सेंटर में ना 2 बड़ा बड़ा चम्मच अचार डालता हूँ, एक कटोरी में ना एक थोड़ा रोटी का 4 भाग करके एक भाग कटोरी में रोटी रखता हूँ, और जितना चटनी डाला ना उतना चावल डालता हूँ, जितना चटनी है उतना चावल डालता हूँ, एंड सब्जी भी आपको जितना वो एक काकड़ी का साइज़ का जो सब्जी ऐसा डालूँगा, विल फिट इज डिसप्रोपोर्शनेट. इज इट राइट? यू कैन से मैंने तो रोटी खिलाया आपको, थाली में रोटी है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है, तो मैंने खिलाया, बट दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट. इतना बीच में चावल का जितना अचार डाल दिया, खाओ 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 खाओ, विल इट गिव यू द एक्चुअल टेस्ट? इट विल नॉट गिव द एक्चुअल टेस्ट. तो एक्चुअल टेस्ट विल कम ओनली व्हेन बैलेंस. रोटी 2 रहना चाहिए या 4 रोटी रहना चाहिए, अचार 1 चम्मच, सब्जी 2 चम्मच या 2 कटोरी, ऐसा इट शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड. राइस ऐसा नहीं कि 2 दाना राइस डाल दिया, राइस भी थोड़ा डालो, अच्छा हिप करके डालो. सो दैट इज हाउ it has to be evenly distributed. Correct weightage has to be given to the correct stuff. You can't give, no, अचार को मैं वेटेज ज़्यादा दूंगा, चावल को रोटी को वेटेज कम दूंगा. अरे चावल और रोटी तो मेन फिलर है, रेस्ट थिंग्स आर गोइंग टू बी additives to that. So you should know what you are actually doing in devotion. If this knowledge is devoid, it is foolishness, and that is why he is scolding him. And Shastra is so beautiful. First,
he is saying in this verse, yatha dharmasya adyah cha artha munivarya. What does the word munivarya means? Clearly says yourself the great sage. उसने स्पिरिचुअल मास्टर, नारद मुनि इज स्पिरिचुअल मास्टर. किसको सिखा रहे हैं? अपने स्टूडेंट को, व्यासदेव को सिखा रहे हैं. मगर क्या बोल रहे हैं? अरे वाह, बढ़िया. इट्स लाइक आई टेलिंग समवन, बढ़िया प्रभु जी, यू आर डूइंग वेरी नाइस. अब आज से नॉनवेज छोड़ दो. मतलब क्या बोल रहा हूँ? मैं डांट रहा हूँ. एक्चुअली आई एम स्कोल्डिंग, बट आई एम स्कोल्डिंग इन ए नाइस मैनर. बोलते हैं शुगर कोटेड पिल, कड़वा टैबलेट है पर उसको शुगर कोट. वेरी नाइस, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी नाइस, बट नाउ यू विल हैव टू डू दिस. मीन्स व्हाट? दिस इज हाउ अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट्स हिज स्टूडेंट्स. ही कैन नॉट से, वो यू आर डूइंग सो वेरी वेल, चलेगा, ये नहीं करेगा, चलेगा, थोड़ा नॉनवेज बीच बीच में खाते रहे, चलेगा. इज इट द राइट वे स्पिरिचुअल मास्टर शुड टीच? हरे कृष्णा, प्लीज कम. Is this the way a spiritual master should teach or accept or make the child progress? Can make you progress? No. You have to somehow or the other make the child understand what is lacking. But पहले very good बेटा, very nice. ये टाइम 35% लाया, नेक्स्ट टाइम 50% लाना. वेरी नाइस. आज इसके लिए भी आइसक्रीम होगा पार्टी घर पे. That's how. You can't say, oh, you got 35%, आज से खाना बंद तेरा. That's not the way. Okay, fine. He has tried his best, he has got only 35. Push him a little, let him, give him some encouragement, give him some proper training, then automatically that same 35% child will come to 55% or 70%. So it will take time. It will not going to be overnight. So that's why Vyasdev here, Narad Muni very nicely, he is praising first Narad Muni. He is saying, praising Vyasdev. So what is he saying? Yatha dharma adyah cha artah. What does this adyah and artah? आद्य मीन्स धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं. मतलब सॉरी, शास्त्र के 4 पुरुषार्थ हैं. क्या है 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. सो इट इज़ लाइक दैट प्लेट. बट यहाँ पे चावल के जगह पे मोक्ष होना चाहिए. मगर मोक्ष कितना डाला है? अचार जितना. मोक्ष कितना डाला है? अचार जितना थाली में, प्लेट में डाला है. और बाकी धर्म, अर्थ, काम का वो बड़ा भर के डाला है. सो व्हाट विल पीपल डू? दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन धर्म, अर्थ, काम. अर्थ मीन्स फायदा. धर्म मीन्स, what is dharma? Following the principles laid down by the Lord. Dharma tu sakshat bhagavat pranita. What Lord has said is dharma is dharma, and in that Lord is very clear. Lord Narad Muni is clearly told आद्य means etc. मतलब उसको वेटेज नहीं दिया है. तो क्या दिया? अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भेलपुरी बना के दे दिए और सब लोग भेलपुरी की तरह गटक भी लिया. सो what he is telling, we'll go back to Bhagavad Gita also. I'll take you to that verse. It's a very important verse. So that is why he is saying Adya, everything you have explained. Oh great sage Munivarya. Munivarya मतलब it's a praising late. अरे महान मुनि. अनुकीर्तन डिस्क्राइब्ड, रिपीटेडली डिस्क्राइब. क्या डिस्क्राइब किया? रिपीटेडली क्या डिस्क्राइब किया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ना तथा ना वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः. वासुदेव की महिमा तूने अनुवर्णिता नहीं किया. यू हैव नॉट डिस्क्राइब्ड वासुदेव्स महिमा. दैट इज वाई इवन आफ्टर डूइंग सच अ नाइस जॉब you are sad. So many people are there in this world who have achieved great heights. Might be somewhere in literature or in business or in IT or in dancing or in acting or some profession or the other. In spite of having achieved all the heights in the material platform, they are still sad. वो लोग फिर भी दुखी क्यों हैं? Why they are sad?
Absence of devotion. Go to 1.2.13. Okay, you don't have to go. I am here. It's on the screen. Read this. What does this say? Atapumbir dvijashreshta varnashram vibhagasya sanustasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. Hari ko खुश करना है. That is the purpose of all our varna and ashram. और हम लोग वर्ण आश्रम में रहते हुए हम अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to make ourselves happy, which is not going to be possible. We are trying to go against the wind, thinking that one day I will go. And उसमें से 4 लोग हैं, वाह वाह, come on, जाओ जाओ. I always tell that story, I don't know whether I've told you. I must have definitely told you. एक बार एक आदमी ना किसी को गांव में से आया था, तो उसको वापस ट्रेन में चढ़ाने जा रहा था. तो बेचारा जा रहा था ट्रेन में चढ़ाने के लिए, तो जस्ट लेट हो गया था, तो गाड़ी जस्ट छूटने की कगार पे थी. एंड सब लोग देख रहे हैं, ये लड़का, अरे जल्दी कर, गाड़ी छूट जाएगी. तो ये लड़का भी भागने लगा, सामान हाथ में रख के, एक सिर पे रख के भाग रहा है. कमान, लोग भी ऐसे, कमान, बाका, आजा, अंदर आजा. भाग के कैसे भी वो ट्रेन में चढ़ जाता है. सब लोग आ जाओ, हाथ देते, कोई हाथ देते, खींच लेते उसको अंदर. या वेरी गुड, कमान, ये तब तालियां बजा रहे, खुशियां मना रहे. तो ये भी आ गया, दुखी बेटा, सिर पे हाथ रख के बैठ गया. बोला क्या हो गया भाई, तू इतना अच्छा ट्रेन में चढ़ाया, तेरे को फिर क्यों दुखी है? क्या बोला? अरे जाना किसी और को था, मैं तो छोड़ने आया था, तुम लोगों ने मेरे को खींच लिया अंदर. हाँ, जाना किसी और का था, मैं तो छोड़ने आया. और गलती किसका था, लोगों का था कि इसका था? लोगों ने क्या बोला, कम ऑन बका, ये भाग रहा है, तो उसको बोला कम ऑन बका, भाग. सॉरी, भाग करके चिल्ला रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई लोग कुछ भी बोलेंगे, व्हाट इज योर फोकस इन योर लाइफ. कई लोग यहाँ के प्रभु जी होता नहीं, क्या करेगा, सब लोग ऐसा बोलता है, वैसा है लोग का. नो, आई गॉट पीयर प्रेशर जैसा, आई गॉट फ्रेंड्स प्रेशर, आई हैव गॉट अदर प्रेशर्स. तो नो, अच्छा है सुखदेव गोस्वामी का इतिहास. तो please understand that people may encourage you for doing nonsense. It is you who has to decide what to do and what not to do. You may be going behind them and you are going past a bar, or going with a friend who is going to the bar, and he will coax you, come on, aja, one peck with me, one round with me, come on, let's have a cigarette together, let's have a puff together. थोड़ा दम मारेंगे यार, no, be a man, come on, you are not a man, you're a real man. You want to बनना है तो तुमको सिगरेट पीना है, दारू पीना है. और कुछ गधे हैं उसकी तरह, हाँ, भाग के उसके साथ हाथ दे के चढ़े जाते हैं, और बाद में गलत चीज़ों के नशा में पूरा जीवन सत्यानाश. एंड तभी रोके क्या फ़ायदा. चलो, जीवन का ये डिफेक्ट तो चलो समझ में आया. The highest defect is you have lost one full birth doing something nonsense. जैसे कुछ लोगों के भाई, हर क्या घास फूस खाता है ना, क्या घास फूस खाता है, थोड़ा मर्दों वाला खाना खा. ठीक है, it's all a phase of life. कहने का मतलब, the point what I'm trying to mention over here is you will get people during your life, but you have to be saying that person is so lucky, at least he got a perfect guidance at the perfect time. अगर वो लेट हो जाता, ये जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता था, वेस्ट. वापस वो टाइम मिलने वाला है. Can you all get your, those who are sitting, who are elder to me sitting in this class, can you all get your college back days even if you pay lakhs of rupees? Will you get that body back? Will you get that vitality? Will you get that spirit and activeness? You'll get back. कितना भी पैसा दोगे नहीं मिलने वाला. So please understand the value of time. Time is most valuable, and we are losing that most valuable thing in some foolish person's talks. वो बोलता है और हम लोग मान लेते हैं, and that is what is detrimental for us in devotion. So मुनिवर्य अनुकीर्तिनः
न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः. आप ना, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग इज ना तथा वासुदेवस्य, तुमने वासुदेव का महिमा वर्णन नहीं किया है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वर्स विच इज, यू आर एट द पर्पट ऑफ दिस, राइट? न यस वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम परिणत करहिचित तत् वायसम तीर्थम उशंति मानसा यत्र हमसा निर्मंति उशिक्षया. वेरी 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 important word. The words are very powerful. English is very beautifully telling it softly, but if you understand the word to word words of Sanskrit, it's really strong. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can satisfy the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like a place of pilgrimage of crows. Pilgrimage of crows. क्या वर्ड बोला है? हाँ, कैसे कौवे सब जा रहे हैं पिलग्रिमेज. उनका पिलग्रिमेज क्या होता है बताता हूँ. Since the all perfect person are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. I'll tell you why this verse is so important for us. This, if one applies this verse, these two verses, 8, 9 and 10, if 3 verses they apply, the life will really change for good. These words which do not describe the glories of the Lord. पहले क्या बोला? तूने तो पहला glories ही describe नहीं किया. Now he is saying, ना यत वचस, वचस means vocabulary, बोलना में. चित्र पदम means decorative, हरेर, the Lord's glories. अगर कोई चित्र बनाए और उसमें मतलब कोई अच्छा चित्र हो और उसमें हरेर का यश, that is भगवान का glories, जगत पवित्रम, which sanctifies the whole world, describes, करहिचित, hardly it is mentioned. वो लिटरेचर क्या है? That is वायसम. वायसम means crows, कौवों का तीर्थ स्थान है. Usually, उशंति thinking, manasa, saintly persons do not yatra hamsa, that is where all perfect beings निर्मंति, take pleasure, उशिक्षया, who reside in the transcendental abode. जो भगवान के भक्ति में रहते हैं वो इन चीज़ों में रमण नहीं करते. Now what is this? Let us understand one thing. What does the word crow actually depicts? Don't tell me कहाँ करने वाला को है, बंद बोलना. What does the word crow actually depicts? हाँ, you know it very well, huh? So you are in the pilgrimage of those places. That is why you have to change. So mundane talks. What else? Very good. That's not the full answer. That's a major part of the answer, but not the full answer. Something more. Why are you getting all the Pitrus from there? As it is, 15 days they have come on a tour. Bolo. Giving importance mainly to the worldly activities. All our The worldly activities, okay? Or something more? inauspicious. No. They pick their food from the garbage. Yes. So they are eating on or glutting on garbage. And you know what is the speciality of a crow? एक कौवा अकेला कभी नहीं खाएगा. कल से R&D करना है. They'll wait. कल से R&D करना बिल्डिंग के छत पे जाके बैठ के. जैसा आप एक कुछ डालो खाने के लिए, वो आएगा, चोंच मारेगा, फिर उधर से बैठ के कहाँ चिल्लाएगा, सब उसका भाई बहन मामा काका चाचा सब आ जाएगा, एंड देन दे विल फीस्ट आउट. So what do they eat? And they eat all garbage. So here what is Vyasdev trying to tell? That those who are
in say the crow mentality of a people, they will be interested in all unwanted things. सब फालतू चीज़ों में उनको रमण आएगा. Have you ever seen a crow eat a dead body? For a rat or a cat, those dead bodies. It's pathetic. But the way the crow enjoys, even a jackal would not enjoy. Really, a jackal eats dead animals only. The lion kills and the jackal eats on the skeletons and bones or whatever leftover is there, it eats on that. So it is said that the Acharya can say that don't worry, हमारे मन में भी है ना एक swan है, एक crow है. See here it is also saying Hamsaha here refers to two ways. It is either for all perfect, Paramahamsa बोलते हैं ना, वो level भी है, और हंस का दूसरा meaning है swan. What does the swan do? पानी में से दूध कैसे निकलेगा? मालूम पड़ा साइंटिस्ट को पकड़ के बॉन्ड कर चलो प्रोडक्शन चालू कर दे. दे कैन सेपरेट मिल्क एंड वाटर इफ यू मिक्स. उनको मालूम है क्या तत्व लेना है और क्या तत्व छोड़ना है. ये ज्ञान अपनारे अंदर कब आएगा मालूम नहीं. बट वी आर ऑल मिक्स्ड. हर आदमी के अंदर कुछ क्रो है, कुछ स्वान भी है. स्वान है इसके लिए इधर आके बैठे हैं, और फिर बाद में बाकी का दिन आप लोग क्या करते हो वो क्रो का काम है. नो आई डोंट हैव टू टेल, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सब अपने मन में झांक के देख सकते हैं कि क्या करते हैं. एंड देन व्हाट इज द हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? नाउ द परसेंटेज ऑफ क्रो एंड परसेंटेज ऑफ स्वान ऑल्सो वेरीज. किसी के अंदर 10%, 90% क्रो, 10% स्वान. किसी के अंदर 40-60, किसी के अंदर 30-70. ये 70 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. सो वी हैव टू स्लोली ट्राई टू मेक आवर सेल्स 100% स्वान क्वालिटी. That 30% of or 40% or 50% of this crow quality which is there, that is the disease of sense gratification. That sense gratification कहीं ना कहीं जाके, चलो जैनी खा रहा हूँ ना, चलो बाहर जाके खाता हूँ, चलो ये घूमने जा रहा हूँ ना, तो क्या हो गया, मंदिर ही घूमने जा रहा हूँ. अरे मंदिर घूमने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? साईं बाबा का मंदिर में. You have to do those things as per शास्त्र. शास्त्र कहता है उस हिसाब से जाओ, उस हिसाब से करो. आप आपके हिसाब से करोगे तो नहीं चले. So that's why it says, and this is like, you see mundane books, mundane movies, mundane your TV serials, so engrossing, so enchanting. एक कौवा देखता है, दूसरे को फ़ोन करता है, मैंने ये सीरियल देखा, तूने देखा क्या? इट इज़ सो नाइस. दूसरा कौवा, कहाँ अच्छा मैं भी देखता हूँ. ही पुट्स ऑन द टीवी एंड देन ही वॉचेस. फिर ये दो कौवे और दो कौवे को फ़ोन करें. और अगर आप 50-50 वाले हैं, 50 crow 50 swan, तो फिर when you take up the phone and when your crow on the other side crow speaks, then the swan sleeps and the crow erases. And yes, I will do it. मैं भी जाके देखूंगा, मैं भी वो करूंगा. And immediately you start doing it. This is the problem with us, especially who are not in. That is why it's always mentioned that a soul is in the tatastha shakti. तटस्थ शक्ति कहा गया. एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, और एक तटस्थ शक्ति. सोल इज तटस्थ. तटस्थ मीन्स व्हाट? इट इज ऑन द शोर ऑफ द सी. कभी समुद्र को देखता है, वाह वाह क्या लहरें हैं. कभी जमीन को देखता है, कभी शोर. कहाँ जाऊँ मालूम नहीं. तो ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है. वहाँ पे भी जाके थोड़ा मज़ा लेके आ. नहीं ब्रो, सैटरडे संडे आपका ही दिन है, बस आपके साथ ही, आपके लिए. बट पूरा मैं भी स्मार्ट हूँ. आई कीप लेक्चर ओनली ऑन सैटरडे संडे. यू कैन डू द क्रो एक्टिविटीज आउटसाइड. यू कैन गो एंड डू द क्रो एक्टिविटीज. यू कैन डू ओनली द स्वान एक्टिविटीज बाय फोर्स. तो देन पीपल टेक प्लानिंग. अरे ब्रो वेडनेसडे आपका लेक्चर नहीं है, तो वेडनेसडे आई विल डू द क्रो एक्टिविटी. So it is like that. So we have to now get up. So what is here was Vyasadeva is trying to tell us that किसी न किसी तरह
Please, Narad Muni, give actual description of God, focused mainly on God. God and God's devotees, both are equally important. That is why if you read the entire Bhagavatam, from the first canto to the last canto, from the Mahima of Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, everything is focused on only on God or His devotees. You see now Prahlad Maharaj, again Vishnu is there, Narasimha Dev comes. You see the Dhruv Maharaj, again you will see Vishnu is there, Vishnu comes and becomes the hero. Jad Bharat Maharaj, again, any story you take Chitraketu Maharaj story, same thing. Every story is either about the devotees or the devotees with whose relation with God is of prime focus. You know, the devotee and devotee's relation is very, very, very important. एक बार ठाकुर जी का मंदिर था, तो वहाँ का जो गोसाई जी रहते हैं ना, द मेन पर्सन, द बाबा who is looking after that. Who is looking after that? What does he do? He is the in charge, but then he cannot do all the work. तो उसने क्या किया, एक बार रात को वॉचमैन अपॉइंट किया, मैं वॉचमैन अपॉइंट करता हूँ. तो वॉचमैन उसको ढूंढा वॉचमैन मिला नहीं. तो एंड में क्या किया उसने, एक सिंगर था, क्लासिकल सिंगर था, उसके पास काम धंधा था नहीं. ही वॉन्टेड मनी, कोई उसका गाना सुनता नहीं था, तो ही वॉन्टेड मनी. तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं जाके वॉचमैन का काम करूँगा. तो उसको अपॉइंट किया. नाउ द प्रॉब्लम विद दैट फेलो वाज, आधा कच्चा सिंगर था, पूरा पक्का नहीं. किस टाइम पे कौन सा राग गाना चाहिए उसको मालूम नहीं. हाँ, रात को उठ के भैरवी गाएगा, रात को भरावे से, वो उसको कोई सुनने वाला तो खुद सुनाता रहेगा. तो मैं बोला भगवान अंदर सो रहे तो क्या हो गया, मैं वॉचमैन का रात भर जागना है, मुझे नींद आ जाएगा, तो कुछ गाना पड़ेगा. तो गाता रहता. होल नाइट यूज टू सिंग भैरवी, राग भैरवी एंड ऑल. तो जैसे उठो भगवान रात को, तो बेचारा भगवान भी परेशान अंदर. ही कुड नॉट स्लीप. होल नाइट जागरण चालू, उसका सो रहे हैं, उठो जागो भगवान जागो करके गाना गा रहा है. और सुबह when he was about to get up, आँखों में नींदिया आ गई भगवान सो जाओ, उल्टा टाइम पे उल्टा गा रहा है. तो भगवान को नींद आ रहा है. As usual, the head priest comes, open the sing, टंग टंग टंग, नहला धुला के देख रहा है, उधर भगवान जी इधर फ्लूट पकड़ के झोंके खा रहे हैं, नींद आ रहा है. क्या नाइट ड्यूटी, क्या हो गया, भगवान को पूछे क्या हो गया. नहीं कुछ नहीं, ठीक है. तो ठीक है, ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ. फाइनली on the 4th day, Lord was he was not able to get up also that day. It was so bad. So the head priest asked him, क्या भाई क्यों इतना सो रहे हो, क्या हो गया, not well, not slept. That day he opened the secret. भाई आपका ये जो वॉचमैन है, वो रात आप जाते हो चालू हो जाता है उसका गाना, हाँ जागो भगवान करके. होल नाइट आई कैन नॉट स्लीप. यहाँ लेट ना हो तो भी इट्स लाइक you are lying down and some DJ music is going outside your window, full blast, you cannot sleep. Definitely you cannot sleep. So it's like that. So Lord says, whole night I have not slept because of this. ठीक है, you tell him रात को नहीं गावे तो अच्छा रहेगा. I can sleep. He didn't tell him to sack him out or anything. But अगला दिन गोसाई जी को गुस्सा आया, मेरा सेवा में तुम भगवान को दुख दे रहे हो, मैं भगवान को सुख देने के लिए तुमको रखा, तुम दुख देने के लिए रखे हो. गेट आउट फ्रॉम द जॉब, यू आर फायर्ड. He said, मैंने क्या गलती किया, ऐसा मत फायर मत करो. नहीं, यू आर फायर्ड. फाइनली आफ्टर बिग आर्ग्यूमेंट सैक्ड हिम आउट ऑफ द जॉब. फाइन. फिर अगला दिन सुबह उठा वापस, दिस आफ्टर 4-5 days. तो उठा, टिंग टिंग टिंग, गोसाई जी आए, घंटी बजाया, बोला जागो भगवान जागो. बोला क्या हो गया, अब क्या हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है, नींद आ रहा है अभी भी आपको. होल नाइट दैट वॉचमैन वॉज नॉट दैट, ही स्लेप्ट वेरी नाइसली. नो नहीं ना, मेरा आदत बिगड़ गया. 4-5 दिन से मैं यही हालत में हूँ, तो मेरा अभी आदत बिगड़ गई. वंस यू गेट इन द ट्यून, डेली स्लीपिंग अर्ली, then also it becomes a problem. Otherwise you go to that day, go to a party and that 9 o'clock you are like
are going to collapse. And vice versa, when you are in habit of sleeping late, लेट ना, आपको अगर 9 बजे आपको बेड में डाल दिया तो भी आपको नींद नहीं आएगा, यू विल बी लॉइटरिंग अराउंड, रोलिंग अराउंड द बेड. सो भगवान बोले सॉरी, रात भर नींद नहीं. अभी क्या मेरा आदत ख़राब हो गया, अभी रात को ये आके गाएगा तभी मेरे को नींद आएगा. तो बोला हर मैं तो बाहर के भगाया दिया उसको. नहीं आप उसको बुलाओ, वापस बुलाओ, चलेगा उसको. सो दीज आर द वे इन विच लॉर्ड्स एक्चुअल कीर्तिस आर. And do these crow-like people or the crow inside you, does it not pull you away from these things? It pulls you towards things which are not required. If you see on a larger platform, these things are only going to suck you to hell. It's not going to take you to it's not going to do anything good. It's like delayed karma reaction. All the enjoyments are like, it's like smoking. When you take the first cigarette in your mouth, you do not get cancer. पहले सिगरेट में किसी को कैंसर नहीं होता. कोई 10 सिगरेट खा लेता है, पी लेता है तो भी कैंसर नहीं होता है. 100-200 खाने के बाद भी नहीं. बट व्हेन इट इज एंजॉयमेंट फॉर अ prolonged period, so that doesn't mean ना भी 100-200 तो आप लोग का लिमिट. प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड. हाँ प्रभु जी आपने तो बोला लेक्चर में, आपका बात सब हम सुन लेते हैं. जो काम का बात है वो सुनते नहीं हो, जो नहीं मांगते वो सुनते रहते हो. हाँ आपने बोला 100-200 चालू कर दिया. So no, that's not the point. The crow inside you will suck you to that. But then when your whole life, when you are busy trying to do this sense gratification, in the end you will get the punishment. It may be in form of any disease or some lung cancer or anything of that. So we can't predict. So the point is, and some people come and tell me, I know my uncle, he's smoking for 85 years, he's 85 years old. कुछ नहीं हुआ, फिट थे, मर गए. मर तो गए ना, एंड में मर तो गए ना, ये तो समझो कि मर गए. तो you have to prepare. That's what we tell you. What does Bhagavatam tells? Parikshit Maharaj is about to die, 7 days time, and there he is preparing for death. He teaches us how we have to prepare for death. So for death, there are two options. At the time of death, all your detachment will be forcibly taken. कोई आएगा, suppose a lady is decked up with nice gold Apple watch, Apple phone, gold bangadi, gold necklace, diamond necklace, and nice shoes, and some people come, hey come on, I want this necklace. Some people say I want the bangle, some people say I want the phone, I want the watch. They all snatch it and go away. You will give easily? You will resist. आप देने को तैयार नहीं होगे. है ये मेरा घड़ी है, ये मेरा नेकलेस है, ये मेरा गोल्ड का रिंग है, ये मेरा डायमंड रिंग है. इट्स माइन 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 माइन. यू आर नॉट रेडी टू गिव इट. यू आर नॉट रेडी टू गिव इट. बट whether you want or you don't want, they are forcibly going to take it. So better no snatching. मैं पहले ही छोड़ देता हूँ. ये ले रिंग, ये ले मेरा सोने का अंगूठी, ये ले मेरा नेकलेस, ये मेरा फ़ोन, ये मेरा ये वो दे दो. So this is what is detaching yourself. You may not physically get detached, but your attraction towards that has to die in due course of time. That is the purpose of Bhagavatam. If you are coming to Bhagavatam for 10 years, but still that attraction doesn't decline, it may not be zero, but at least it should come down. Then the purpose of what Vyasadeva and Shukadeva Goswami is doing is not at all achieved. So that is why those words which do not describe the glories of the Lord, not only who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, which can give you happiness, which can give you sanctification. Sanctification मतलब शुद्धता, आपको purity, and what was one more wise word? I'm missing it out. I'm not getting that word. It's a very nice word. It's giving you that satisfaction, that sanctifies the whole atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. So, अगर कोई भी चीज़ में आपका भगवान का संबंध नहीं है, the worst to what is going to come, and after 1 week,
after 15 days. It's going to be, what is going to start? चालू हो गया ना? It is not Navratri, Prabhu, it is Lavratri. That is, the definition has changed. It has changed, the definition has changed. There, Mataji will be there, some corner. And all the people, especially the boys and girls, will be all decked up in their best. This was earlier, when I used to start my preaching, it used to be boys and girls. But now I have to say every male and female, irrespective of the age bracket. Because everyone is busy thinking they are still sweet 16 going on 17. That's what everyone is thinking, even the elders, because they are all in the bodily concept of life. And they are now that Navratri will start. And what will start? What song you are going to dance on? Which Abhanga and which Kirtan you are going to dance on? अब कोई अभंग कीर्तन पे नाचने वाले तो ठीक. That is also a crow activity. That is, those people are perfect example of 70-30. 30% spiritual, 70% crows. 30% swan, 70% crows. Why crows? It's the same activity when danced on the song of the Lord or the Devi. नवरात्रि में जो भी दुर्गा माँ का जो सॉन्ग रहे, उसमें आप अगर गाते हो तो it makes sense. Otherwise, all this so-called activity what you are doing is a criminal wastage of time. There you are also only trying to justify your senses. आप आपके senses को खुश करना चाहते हैं. So it's better that we increase the proportion of swan inside us and reduce the proportion of crow. Reduce it means कम तो हो गया ना प्रभु जी. पहले हफ्ते में 10 दिन खाता था, अभी हफ्ते में 4 दिन ही खाता हूँ. That is not reduction. That is not reduction. Those activities like meat eating, intoxication, illicit sex and gambling are referred to for humans, not referred to as for animals, not for humans. A human means human life starts from the point a person leaves the unwanted things, that is meat eating, intoxication, illicit sex and gambling. Then he becomes a human being. क्यों? बकरा भी घास खाता है मगर वो साधु नहीं है. बकरा भी घास खाता है मगर वो साधु नहीं है. Prabhupada once told, once a devotee came, Prabhupada, I have become a vegetarian. So Prabhupada said, what's so great? Even crows, sheep and cows are vegetarians. Sheep and goats are vegetarians. He said the same word. So he said, Prabhupada said, no, please don't think by doing some, leaving some bad activity you become spiritual. इसके लिए the crow swan proportion if it is high, then what happens? मैं मंगलवार को, मैं शनिवार को बिल्कुल. That day swan comes up. Then the rest of the week, the crow is काम खाते रहते. And some people also go to an extent of saying that ये जो अपना material life है, इसमें दोनों चीज़ का blend होना चाहिए. Blend होना चाहिए. Don't say no. Have nice food. Have nice varieties of food. We are adding now 3 दिन गणेश चतुर्थी 3 दिन हम लोग जहाँ गया मैं खाते रहा. Varieties I had, but it was all sattvic. So you can enjoy sattvic food. It's not that you can't enjoy sattvic food, but it depends on your कितना क्रो है और कितना स्वाइन. तो जब भी कल से कोई एक्टिविटी करोगे आप पहले क्या चेक करोगे? Whether I am a crow or I am a swan. Oh yeah, I'm swan. And then you can start eating, doing any activity, I should dance like this. And when you're doing a bad activity, a wrong activity, what are you going to do? Cow. Then you're going to do that. So you remember that. So please, I would like to see that none of you will do this cow, all do this hamsa. Okay, with this I'd like to end today's lecture because we have to discuss about the yatra also. So, Jigar Prabhu, we can stop the recording, and if anybody has got any questions, any doubts, can ask.